नमस्कार साथियों। आज जब हम बात करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो के बारे में फिर से बात करें, जिसको बुलाते हैं हम न्याय पत्र, न्याय का संकल्प। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपको लगा कि आपका जीवन पहले से बेहतर हो गया? पहले से मेरा तात्पर्य है 2014 के पहले। 2014 में जिन वादों को आपसे किया गया था, क्या वो वादे सचमुच में पूरे हो गए? क्या 2014 से पहले की जो ज़िंदगी थी, उसमें कोई कमी थी? क्या जब ₹400 का सिलेंडर मिल रहा था, वो समय बेहतर था या आज का समय है, जब 1200 का सिलेंडर हो जाता है और चुनाव आते-आते 822 का सिलेंडर कर दिया जाता है? लेकिन जब मैं आपसे ये बातें पूछ रही हूँ, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि आपका जीवन पहले बेहतर था या अब बेहतर है? जब मैं इस बात को करती हूँ, तो वो इसलिए भी करती हूँ, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं आज, तो आज क्या आपके पास नौकरियाँ हैं? क्या आप भय का जीवन जी रहे हैं? क्या आपको किसी प्रकार का डर है? या बिना भय के आप अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं? क्या आपके पास नौकरियाँ हैं? एक बेहतर सिस्टम है? या अगर कभी लगता है कि अगर सरकारी नौकरी होती, तो कितना अच्छा होता? 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करी गई है, जो केंद्र सरकार में है, जिनको पूरा नहीं किया गया, उनको पूरा किया जाए। लेकिन आज बात कर लेते हैं हम मैनिफेस्टो में जो भाषाई और धार्मिक माइनॉरिटीज़ यानी कि अल्पसंख्यकों के बारे में कहा गया है, और मैं एक-एक करके आपको सारे बिंदु बताऊँगी, मात्र 9 बिंदु। उसके बाद इंग्लिश में बोलूँगी। कांग्रेस पहला बिंदु, कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। तो मतलब हम आपके जो अधिकार हैं अल्पसंख्यक को जो अधिकार हमारे संविधान ने दिए यानी कि बाबा साहेब ने दिए, हम उनका सम्मान करेंगे और उन्हें बरकरार रखेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आने देंगे। तो कांग्रेस भारत के संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 29 और 30 के तहत भाषा की दृष्टि से अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी और उन्हें बरकरार रखेगी। जो भाषा के अंतर्गत आपको अल्पसंख्यक आप होते हैं और भाषा के अंतर्गत आपको जो फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए हैं, हम उनको बरकरार रखेंगे। और 3, कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला और अन्य क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और सहायता देगी। मतलब जो भाषाई या धर्म के अनुसार अल्पसंख्यक है, उनके छात्रों, उनके युवाओं के शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, खेल, कला और जितने बाकी मतलब क्षेत्र हैं, उसमें आपको अवसर दिया जाएगा ताकि आपको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि आप उन अवसरों का इस्तेमाल कर सकें। कई बार आपको पता ही नहीं होता कि कैसे करके आप उन अवसरों का इस्तेमाल करें, हम आपकी उसमें मदद करेंगे। 4, कांग्रेस विदेशों में अध्ययन के लिए मौलाना आज़ाद छात्रवृत्ति को फिर से लागू करेगी और छात्रवृत्ति की संख्या बढ़ाएगी। मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप को दोबारा से लागू किया जाएगा और जो छात्रवृत्ति की संख्या है, जितना मिलता है उससे ज़्यादा करा जाएगा, जितने जनों को मिलता है। और ये छात्रवृत्ति मिलती है विदेशों में जाकर पढ़ाई करने के लिए मिलती है। 5, अल्पसंख्यक अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उनका आर्थिक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस आसान ऋण प्रदान करने की नीति बनाएगी। जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो भाषाएँ हों, उनको मानवीय और नागरिक अधिकारों का इस्तेमाल करने के लिए उनके लिए उनके सशक्तिकरण के लिए वो भी आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनको अ, आसान ऋण दें ताकि वो कर सके आराम से वो अपने अधिकारों का, अपने मानवीय और नागरिक अधिकारों का पूर्ण रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जब तक वो आर्थिक सशक्तिकरण नहीं होगा, पैसे उनके पास नहीं होंगे, तो कैसे वो समाज में अपने आप को बाकियों की बराबरी का कर पाएँगे? तो उसके लिए आसान ऋण देने की अ, जो नीति है वो बनाई जाएगी। 6, कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल, सरकारी नौकरी, लोक निर्माण अनुबंध
जो कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं पीडब्ल्यूडी के, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में बिना किसी भेदभाव के उचित अवसर मिले, आपको अपॉर्चुनिटी मिले हर इस फील्ड में, ताकि आप अपने आप को अलग-थलग महसूस ना कर सकें। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्वास्थ्य देखभाल में, सरकारी नौकरियों में जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, ठेकेदारी मिलती है सड़क बनाने की और ये सारे कामों की, कौशल विकास, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और आपको उचित अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, ये सुनिश्चित किया जाएगा। 7 कांग्रेस ये सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक नागरिक की तरह अल्पसंख्यकों को भी पोशाक, खान-पान, भाषा और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो। केवल ये करना कि आप ये नहीं पहनेंगे, आपको तो ये पहनना है, आप ये नहीं खा सकते, आप वो खा सकते हैं। इस चीज़ की जो जिस तरह आप ये नहीं पी सकते, आप वो नहीं, आप उससे शादी नहीं कर सकते, आप इससे आप ऐसे नहीं कर सकते, वैसे आप भाषा क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? हिंदी भाषा जैसे दक्षिण भारत के लोग बड़े नाराज़ हो जाते हैं, उस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अपनी चीज़ों को थोपना, उनके भाषा के बजाय कहो कि जी नहीं तुम हमारी वाली भाषा बोलो, क्या मतलब है? और व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता हो कि जो आपके पर्सनल लॉज़ हैं, उनकी आज़ादी आपको मिले, इसको सुनिश्चित करेगी कांग्रेस पार्टी, ये है गारंटी कांग्रेस की। 8 कांग्रेस व्यक्तिगत कानूनों में यानी कि पर्सनल लॉज़ में के कानून जो है पर्सनल लॉज़, उनमें सुधार को बढ़ावा देगी। ये सुधार संबंधित समुदायों की भागीदारी और सहमति से किए जाएंगे, सबको साथ लेकर। जो उसमें स्टेक होल्डर है, आप खुद हैं अगर अल्पसंख्यक तो आपसे भी पूछा जाएगा, ताकि हम जो सिस्टम बनाए वो बेहतर हो और आपके सुधार के लिए, आपकी बेहतरी के लिए किया जाए। 9 कांग्रेस संविधान की 8वीं अनुसूची में अधिक भाषाओं को शामिल करने की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने का वादा करती है। अल्पसंख्यकों के लिए मात्र ये 9 बातें कही गई हैं, मगर एक बात अल्पसंख्यक समझ लें, जो बात मैंने ओबीसीज़ को भी कहा है और शेड्यूल ट्राइब्स, दलित, आदिवासी इन सबको भी कहा है। ये समझ लीजिए कि ये जो 400-400 का की रट है, वो किस लिए है? वो इसलिए ताकि जो एक मैजॉरिटेरियनिज़्म की पॉलिटिक्स है, उसको करके आप सत्ता में आ जाइए, ये कहकर कि आप लोगों के अधिकार छीनिए। जब हम कहते हैं कि संविधान बचाना है, तो दरअसल हम कह क्या रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले संविधान बदलने के लिए ज़्यादा सीटें चाहते हैं। अब की बार सावधान होके हर जगह से इनको हटाना है, ताकि इनको वो नंबर ना मिले जिससे ये संविधान बदल सके। जानते हैं क्यों बदलना चाहते हैं संविधान? क्योंकि ये रिज़र्वेशन को खत्म करना चाहते हैं। ये आपको जो एक अपॉर्च्युनिटी मिलती है आरक्षण के कारण, उस आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि नफ़रत है इन्हें अल्पसंख्यकों से, आपके शेड्यूल कास्ट दलितों से, शोषित वंचितों से, आदिवासियों से और जो पिछड़े वर्ग हैं, उनसे, महिलाओं से जो इनके कंट्रोल में ना आए, उन सभी से इन्हें नफ़रत है, इसलिए इन्हें संविधान बदलने की इच्छा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आपसे वादा इसीलिए कर रही है कि हम आपकी बेहतरी के लिए क्या किया जाएगा। आप बताइए कि क्या आपका जीवन 2014 से पहले आज बेहतर है? किस भय के साथ आप जीते हैं? आज मेरे साथ 2 बहनें थी, जिनकी आँखों में आँसू थे जब वो ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि हम इस देश के वासी ही नहीं हैं, जैसे हम तो पैदा ही यहाँ नहीं हुए, हम कहीं और से आए हैं, आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और उनको भी वही तकलीफ़ें होती हैं जो मुझे होती हैं, जो महिला के तौर पे उनको होती है, वही मुझे होती है। जो उनके बच्चों को तकलीफ़ें होती है, वो हमारे बच्चों को तकलीफ़ें होती है। चोट लगती है तो दर्द जैसा उन्हें होता है, वैसा ही दर्द हमें होता है, दूसरा तरीके का दर्द नहीं होता है। अगर हम गिर जाएँ और खरोंच आ जाए, तो जैसा दर्द उनको होगा, वैसा ही दर्द हमको होगा, अगर हमें खरोंच आ जाए। लेकिन क्या करें? ठीक है, आप लोग जैसा सोचना चाहें। Let me now talk about the religious and linguistic minorities and what the Congress Manifesto says about it. The plurality of religions represents the history of India. History cannot be altered. इतिहास को नहीं बदला जा सकता. All people living in India and all children born in India are equally entitled to enjoy human rights that includes the right to practice one's religion. Pluralism and diversity constitute the ethos of India and are enshrined in the preamble to the Constitution of India. Given the history and the democratic traditions of India, the Congress believes that there is no place for authoritarianism or majoritarianism. Linguistic and religious minorities are granted human and civic rights under the Constitution of India.
Congress pledges to uphold and protect these rights. Today, the minorities feel left out and they feel as if they don't belong to a country that is theirs. No, the Congress believes that this country is as much yours as ours. Of course, these people who are so hateful, they do say that the minorities have already got another country, they should go there. But, they are hateful people. Just ignore them. For us, every human being who is a citizen of this country belongs here. And in the last 10 years, the kind of self-control and the kind of manner in which you have you know lived, or rather led your life in these 10 years where you were targeted, we know very well. uh, it says a lot about you. We respect a lot. We respect you for that. And of course, when the Prime Minister talks about hateful things, just ignore it, because this is politics. This country is as much yours as it is ours. And here I would like to tell you what the Congress Manifesto has to say about religious and linguistic minorities. There are just 9 points. First, we will respect and uphold the fundamental right to practice one's faith and the rights guaranteed to religious minorities under Articles 15, 16, 25, 26, 28, 29, and 30 of the Constitution. Second point in the manifesto of the Congress Party says, for the religious and linguistic minorities, we will also respect and uphold the rights of linguistic minorities guaranteed under Articles 15, 16, 29, and 30 of the Constitution. So we will not only respect your rights, but we will uphold them that the Constitution has given you. So whatever anybody says about your rights, these rights have been given to you by the Constitution of India, and therefore believe in your rights, and believe that those rights are for you. You are not being left out, or you're, even if somebody is trying to make you feel like you don't belong here, you belong here. You belong here. You own this country just as much as I do or anybody else does. Point number three, we will encourage and assist students and youth belonging to the minorities to take full advantage of the growing opportunities in education, employment, business, services, sports, arts, and other fields. So we will make sure that we will assist the students and the youth uh, who belong to the minorities to get opportunities, and not just get opportunities, to take full advantage of those opportunities in the field of education, employment, business, services, sports, arts, and other fields. Point number 4 of the Congress Manifesto, Nyay Patra Nyay Ka Sankalp, says we will restore the Maulana Azad scholarships for study abroad and increase the number of scholarships. So till now, I've told you 4 points, and we've only spoken about how we respect you, what the Constitution has given you. We will uphold that, and we will make sure that you're able to, our children of the minorities are able to get the opportunities and make the most of their opportunities as far as education, employment, business, services, sports, arts, and other fields are concerned. And also that we will restore the Maulana Azad scholarships for studying abroad, and we will also increase the number of scholarships. Point number 5, and there are only 9 points here for religious and linguistic minorities. Tell me if whatever the BJP is saying is present in my manifesto. It isn't. So point number 5 of my manifesto, the Congress manifesto, says the economic empowerment of minorities. The economic empowerment, that means financially you need to be empowered. The economic empowerment of minorities is a necessary step for India to realize its full potential. India will move forward when every citizen has an opportunity and is able to make use, take advantage of the opportunities that are being provided. We will ensure that banks will provide institutional credit to minorities without discrimination. They will not discriminate, and they will give you, loans so that you can do some work, or whatever work you want to do. The process will be made easy. There will be no discrimination. Tell me, this is point number 5. Is there anything that has been said by our opposition, the BJP, that is there in my manifesto as far as minorities are concerned? Come to point number 6.
We will ensure that the minorities receive their fair share of opportunities in education, healthcare, public employment, public work contracts, skill development, sports, and cultural activities without discrimination. So, not only did we talk about the economic empowerment of minorities, so that the so that the minorities are able to utilize their potential, and also not be uh, you know hard stuck for your credit. So you will get loans easily, and we will also make sure that you get your fair share of opportunities, fair share of opportunities. We're not giving you something, we are giving you opportunities, and we are giving you fairness in the opportunities. We're not discriminating against you, and we're not taking away your opportunity or giving it to somebody else, or taking somebody else's opportunity and giving it to you. No, we will give you a fair platform, and we will make sure that you are empowered enough, that you are at the same level as those who are already empowered, are financially secure, and they can avail of these opportunities in education, in healthcare, in public employment, in public work department contracts, in skill development, sports, cultural activities, without any discrimination. So these are 6 points. Now there are only 3 points left. Let's see what is there the last. Seventh point, Congress will ensure that every citizen, minorities have the freedom of choice of dress, food, language, and personal laws. Meaning, you can wear what you want to. Nobody's going to force you to wear something that we would like you to wear. We are not like that. We will not force you not to wear something or to wear something. It's up to you what you want to wear. And so clothing is going to be a free choice. What you want to eat, who am I to tell you what to do on which day? And that is something which is happening in the country today. So we will not be doing that. What language? Oh, constantly to the south. Hindi, Hindi, Hindi. No, let's learn the southern languages. I wish I could know more of the languages of the south, but they are beautiful languages, and I would suggest that every language should be respected. And in fact, they should get more space in the schedule of languages, which I'm coming to. That is also there. So 7th point is that you will have the freedom of choice of dress, of food, language, and personal laws. Personal laws will be maintained, and that's very clear. The BJP wants one kind of people, one person, and only one and one and one. But here we respect your personal laws. And you know that this is being twisted about the food, but well, who's anybody to tell me what food I have to eat on which day, right? Point number 8, we will encourage reform of personal laws. Reform is required in every area. You know, for the betterment of people, laws need to be reformed, and they need to be done in such a way that the entire community is taken on board, and it helps the community to grow. So point number 8 says we will encourage reform of personal laws. Such reform must be undertaken with the participation and consent of the communities concerned. And point number 9, which is the last point here, Congress promises to meet long-standing demands for inclusion of more languages in the 8th schedule of the Constitution. A lot of people have been saying that, include our language in the Constitution, and for reasons, best known to the leaders of the past, this has not happened. And therefore, we will ensure that more languages are included in the 8th schedule. But here I would like to say that a lot of times we are hearing that Prime Minister Modi is talking about 400 seats. So why is he talking about it? He wants to change the constitution. What is it that affects you in this change of constitution? I'm talking about the minorities, the OBC, the SCs, the ST, everybody who is poor, who is backward, who is a minority, and women. They're all hated by the BJP. So the BJP think that you give 5 kgs of ration to women and they shut up. But in the country today, we are talking about the Mahalakshmi scheme, under which every poor family will get 8,500 rupees per month, which will go into the account of the of one woman in that family. So here we are talking about something which will help you. But why does the BJP want to
change the constitution. Is your life better than what it was before 2014 when the gas cylinder was 400 something? Today, it is 822 because it's election time, but it had gone to 1200. Can you imagine if BJP comes back, it'll go to 2000? And all those people who might just scream and shout and say that, yeah, it's okay. Really, it's not okay, right? So vote for that hike which has taken place from 2014 to 24 in the price of the gas cylinder. But why is it that all these leaders are talking about 400 baht? Because they want to change the constitution. Till here, let me take it a step. Why do they want to change the constitution? Because they hate anybody who stands up in front of them. They hate the oppressed, the suppressed, the Dalits, the backward, the scheduled caste, the Dalits, that is, the STs, scheduled tribes, that is the Adivasis, the OBC, backward classes, and women. They hate. So women, they want that they should just get their 5 kgs of ration and shut up, and the rest of you, please remember, what they want to do is strike away reservation. They want to do away with reservation because they hate getting opportunity. They don't want you to come forward. That is what the BJP's problem is. And therefore, they want 400 so that they are able to change the constitution. Because unless they have 2/3 majority in both houses of parliament, plus, in the states, they will not be able to change the constitution. That's the reason why they're asking for 400 seats. But the purpose for that 400 seats is so that once they get that majority, they change the entire thing as far as reservation is concerned. The Congress party is saying that we will remove the 50% cap on reservation, whereas the BJP wants to remove reservation because they don't want the OBCs, the minorities, the SCs, the STs to get the opportunity. So I hope you will understand what is written in the manifesto of the Congress party for the linguistic and religious minorities of India, and keep smiling. Let them say what they want. They want to break you, but you need to be strong and you need to believe in yourself, believe in your country. We stand with you. Watch this video properly, understand what the manifesto says. I've spoken in both English and Hindi. Share it with other people so that people come to know what the truth is about the Congress manifesto. न्याय पत्र, न्याय का संकल्प. दोबारा मिलेंगे. जय हिंद.